Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve the problem of the day by GFG, and today's problem name is nth Catalan number. So in this question we have to determine the nth Catalan number. So first of all, what is the Catalan number? So Catalan number is a series of a numbers such that my n plus 1th Catalan number can be determined by this particular formula. So अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, so let's see what would be the Catalan number for 4. What is the C of 4? So according to this formula, C of 4 would be what? Since in this case, if we compare the n plus 1 with 4, it means my n would be 3, right? So this is nothing but C0 times C3 plus C1, then C2, multiply C2, then C2, C1 plus C3, C0. So this is the basically formula to calculate any particular value using a Catalan number. सो जैसे फिबोनाची सीरीज होता है जहाँ पे हमारे पास nth नंबर डिपेंडेंट होता है लोअर वैल्यूज पे n-1th एंड n-2th वैल्यू पे. Similarly, Catalan number is also dependent on all the values which are smaller than it from 0 to n-1. And if we consider it as a n plus 1, it means that we have to use from 0 to n values to calculate the value of n plus 1, Catalan of n plus 1, right? And there is a base case, the value of C0 is considered as 0. This is given. So how can we calculate the value of C4? Let's see. So since my C0 is 0, it's mentioned in the question, then my C1 would be C0 according to this particular formula only. It means if my Cn plus 1 is equals to 1, it means my n has to be 0. So it means C0 to n is also 0, so C0 to C0, right? क्योंकि a की वैल्यू छोटी है इससे. So this is nothing but 1 into 1. So this will give me 1, right? Similarly, C2 would be what? C1 into C0 plus C0 into C1. बेसिकली दो टर्म्स होती है. फर्स्ट टर्म डिक्रीज कर रही है बाय 1, विल स्टार्ट विद n-1 अगर हम n कंसिडर करें इसको, एंड जो सेकंड टर्म है वो 0 से इंक्रीज होती है टिल n-1 तक. एंड इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी द कैटलान नंबर. अगर आप यहाँ देख पा रहे हो ये इंक्रीज कर रही है, या 0 था या 1 हुआ. जो दूसरी टर्म थी वो डिक्रीज कर रही है स्टार्टिंग विद n-1, अदर इज स्टार्टिंग विद 0, राइट? सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, C2 की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी व्हाट, C1 is 1, C0 is also 1, so it's like 1 into 1 plus again 1 into 1. So this is nothing but 2. Similarly, C3 की वैल्यू क्या होगी? So 1 is starting with n-1, that is 2. Other is starting with 0. First value decrease कर रही है by 1, so C1 आएगा. Second is increasing, तो यहाँ पे C1 ही आएगा. 0 से 1 होगा इंक्रीमेंट करने के बाद. फिर first is decreasing, so it would be 0. Second is increasing, so it should be C2, right? अब इसकी वैल्यू क्या होगी, लेट्स सी. C2 is 2, C0 is 1, C1 is 1, C1 is 1, C0 is 1, and C2 is 2. So this is nothing but 5. Similarly, C4 find करते हैं. C4 would be nothing but C3. n-1 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है. फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज करेगी तो C2 आएगा. सेकंड इंक्रीज कर रही है, so it would be C1, this would be C2, then this has to be C0 and this should be C3, right? ऐसे हम C4 को कैलकुलेट कर सकते हैं. जो फर्स्ट वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है बाय 1, स्टार्टिंग विद n-1, कंसीडरिंग दिस इज इक्वल्स टू n. सेकंड स्टार्ट कर रही है 0 से and it is increasing till n-1, and the total number of terms are n, if you see, because we are moving from 0 to n-1, so hence the total number of terms should be n in the expression. अब देखिए आप इसको. So C3 की वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, दैट वाज कमिंग इक्वल्स टू 5. So 5 into C0 था मेरे पास 1, then C2 was 2, C1 1 था, so similarly this, and C0 was 1, C3 was 5. So this is nothing but 10 plus 4, 14. So ऐसे करके हम सीरीज में कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज. लेट्स से मुझे पहले Cn को कैलकुलेट करना है, सो मैं आइटरेट करूंगा. पहले C0 तो गिवन है, पहले C1 कैलकुलेट करूंगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, देन आई विल कैलकुलेट C2, so on, and the end I will calculate the value of Cn. So question हमें कैटलान ऑफ n निकालना है. So first of all we have to calculate all the smaller values. Using that particular values will compute the value of my Cn, right? So
Let's take a look at the example also. In this case, n is given to be 4. We have to determine the catalan of 4. So it's coming 14. And we have checked it also. Right? Now it's a time to look at the code. Also, we have just implemented this particular formula. That's it. This formula where my C of n plus 1 was C naught plus Cn. We just have implemented this formula. Let's see how we have implemented. So first of all, I have declared the one dp variable, a dp array or the vector, such that dp of I will represents the value of my ith value of my catalan number, right? So this is the representation of my dp of I. So initially, as we know, my catalan of 0 is 1. So we have initialized my dp of 0 with 1. Right after that, in order to calculate the catalan of n, as we discussed, we have to iterate. First of all, we have to calculate the catalan of 1, then 2, and so on. In the end, we will be able to calculate the value of my nth catalan number, right? So, in order to calculate the value of my ith catalan number, we already discussed what was the formula. We have to need a value of my I minus 1th catalan number, and the second term is starting with 0. अब ये टर्म डिक्रीज करेगी, ये I minus 2 होगा, ये जो फर्स्ट टर्म थी वो इंक्रीमेंट करेगी, सो ऑन टिल जब तक मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो डिक्रीमेंट होकर 0 ना बन जाए एंड द सेकंड टर्म मेरे पास I minus 1 ना बन जाए, राइट? सो दैट वाज द फॉर्मूला. सेम थिंग आई एम यूजिंग हियर इनसाइड द इनर लूप. सो मेरे पास मुझे पता है ये मेरे पास फर्स्ट टर्म की तरह एक्ट कर रही है. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डीपी ऑफ आई और वी कैन से कैटलान ऑफ आई, मुझे कैटलान ऑफ आई माइनस 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि जे तो इनिशियली 0 था एंड द सेकंड टर्म इज स्टार्टिंग विद catalan of 0 because j is 0 initially. This is nothing but catalan of I minus 1. In the next iteration मैंने ये कैलकुलेट किया और dp of I में इस वैल्यू को ऐड कर दिया, राइट? ऐसे क्योंकि इन सभी वैल्यूज का क्या है, जो सभी टर्म्स इनका सम चाहिए, तो ऐसे मैं सभी टर्म्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर इनको मैं ऐड कर रहा हूँ डीपी में. ऐसे करके मुझे डीपी ऑफ आई मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर इनर फॉर लूप, राइट? एंड मेरे पास नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, जब जे की वैल्यू 1 होगी, सो दिस विल बी 1, दिस विल बी सी माइनस आई माइनस 1, सो दिस विल बी आई माइनस 2 एंड सो ऑन. सो बेसिकली मैं इनर फॉर लूप लिखूंगा दैट विल स्टार्ट विद जे इक्वल्स टू 0 टू जे इक्वल्स टू आई माइनस 1, राइट? एंड हमारे पास ऐसे करके हम हर एक टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे एंड उसको डीपी ऑफ आई में ऐड करेंगे, राइट? वी आर एडिंग ऑल दीज टर्म्स in order to calculate the value of my catalan of I. So same thing I am doing here, and at the end of the second for loop, the outer for loop, we will be having the value of my catalan of n and my dp of n. So I can return that. But there is one more thing mentioned in the question. Since the value of catalan of n can be very large, so in order to reduce into the range given to us, we have to take its modulo with 1 in 9 plus 7, right? So that's why in order to bring it back into the range, I have taken a modulo wherever there is a chances of integer overflow, right? So ऐसे करके हमने यहाँ पे मॉडल लिया एंड इन द एंड वी आर रिटर्निंग द आंसर. सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वाचिंग.